पावसासाठी छान बस 2 महिने आम्ही ड्युटी केला सारखी डोळ्यान तेल घालून पायाक तेल लावून तो हो एकूच दीस आहा तो सगळ्या तुमचं नाव हे दवरला सगळ्यांनी तशेंच दवरचे मागीर तुमकां जाय थंय पार्टी दिवया कळ्ळें सगळे वचपाचे LTPO चेअरमॅन सांगता की 2 महिने आम्ही मॉर्न ड्युटी केली आणि फाल्यां इज द लास्ट डे दॅट इज अ काउंटिंग ड्युटी मास्टर जे आसा तांकां तेंची मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की स्टाफ जो स्किमीचेर घातला तितलो स्टाफ जाय कमी कोण सीक जालो कोण एबसेंट जालो ते तेणी तांकां एडजस्ट करून दुसरो स्टाफ घालून स्टाफ तितलोच जाय कित्याक स्टाफ कमी येयलो जाल्यार प्रॉब्लेम जातलो सो आमचे कडेन एडिशनल स्टाफ हांगा ना जे स्किमीड स्टाफ आसा तितलो स्टाफ जाय आणि स्पेशली जे प्रत्येकाने PI इंचार्जांक सांगता की प्रत्येकाने आपला रोप सफिशियंट रोप आणि मेगाफोन लावड हेलर वो गाडयांक आसपाकूच जायो आणि स्टाफाडेन थोड्या लाट इम्पॉर्टंट प्रॉपर टर्नआउट प्रॉपर ड्रेस आणि जे काउंटिंग हॉला कडेन ड्युटी आसतले किंवा स्टोरेज स्ट्रॉंग रूमा कडल्यान तर टनल अप टू फर्स्ट फ्लोराचेर 10 काउंटिंग सेंटर टिल द फर्स्ट सेकंड फ्लोर ऑफ द पॉलिटेक्निक कॉलेज दॅट इज काउंटिंग हॉल्स इज व्हेरी सेन्सिटीव ड्युटी EVM मशीन घेवपाक तांची कलेक्टरीचो स्टाफ आसतलो बट आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू गिव देम प्रोटेक्शन दॅट इज गार्डिंग सो अलर्ट जे कोण ते भितर ड्युटी आसा तेणी पयलीं ब्रेकफास्ट करचो आनी परत आपले ड्युटी एक्चुअली 8 काउंटिंग बट द मुवमेंट विल स्टार्ट एट अराउंड 6 ते ओपन जातले सील काडटले मागीर थंयसर ते कॅरी करतले वयर एंड देन दे वील टेक फॉर अ काउंटिंग शार्प एट 8 o'clock सो व्हेरी इम्पॉर्टंट एबसेंट रावनाकात आनी टायमार ड्युटी आहा व्हेरी इम्पॉर्टंट पंक्च्युअलिटी इज अ हॉलमार्क ऑफ दीस बंदोबस्त नाल्यार कोण 8 5 घातलो 6 येता 7 येता धांवट येता तें नाका पार्किंग तुमकां वयर GRP आमचो ग्राउंड आसा तुमचे मोटरसायकली आयल्यार तांकां पार्किंग बेगीन येयल्यार पार्किंग मेळटलें प्लस आमचे जिओ इन्स्टिट्यूट आमकांय आसा प्लेस अलर्टनेस आसता तें बारीक बारीक गोश्टीचे आतां
आमचो दळवी साहेब तुमकां ब्रीफ करता, 2 उतरां सांगतलो मला ती आयकून घेवची तुमी शांतपणे. भारत माता के, अरे लावले, भारत माता के, भारत माता के. Okay, everybody has done very good election bandobast. Especially I congratulate our probationary PSIs who have done wonderful job during election, voting, and during SST team or surveillance team, all have done perfectly fine. That tomorrow is the last day of code of conduct. So we are still under code of conduct. We are governed by Election Commissioner of India. Tomorrow, all observers, all police observer, collector, everybody will be focusing here only. Otherwise, they have to focus entire state. But all officers, observers, deputy collector, returning officers, everybody will have focus here. So your one moment will be noted. Plus there is a CCTV footage covering you. If your small misconduct is noted and covered in the CCTV footage, then nobody can save you. As STPO Porori said, कि mobile should be avoided. Talking on the mobile should be avoided. I am given the charge of escorting EVMs from strong room to the all polling centers, voting centers, counting centers. So it is a specific, very staff working under me should ensure that it is we are lucky to have such a sensitive duties. It is all on the caliber of the officers they are posting in such a sensitive place. So officers or staff who are under me has to ensure that no mobile should be used, because this entire passage is covered by the CCTV cameras. So let us perform we have performed extremely well for entire code of conduct. Tomorrow is the last duty for election of this Lok Sabha election. So let us perform well. Let us see, better give the example to entire state that Goa police are the best, and I'll give assurance on everybody's behalf. SP sir is coming that we will perform well, and we will not give any chance for any observer or any collector madam or anyone to point out that you are doing wrong duty. Are you ready? Loudly, are you ready? Very good. So counting for Lok Sabha elections will happen tomorrow on 4th of June. It will start at 8 AM sharp. All our staffs have been trained and are deployed for duty. Observers have also come here who will be monitoring the entire counting process. We are expecting to finish it soon. We have 20 halls for every assembly constituency, and postal ballot will be counted in a separate hall. And EVM countings will take place in the 20 halls. As soon as every round counting is done, announcements will be made frequently, and at the end of the entire counting process, final result will be announced tomorrow. सिक्योरिटी कैसे रहेगी? और सिक्योरिटी 3 कॉर्डन्स में रहेगी. सबसे बाहर 100 मीटर पे पुलिस फोर्स रहेगी. who will not allow anyone without any ID card inside the perimeter of 100 meters. No vehicle will be allowed inside 100 meters perimeter. फिर सेकेंड लेयर पे आर्म्ड पुलिस रहेगा जो आपको फ्रिस्किंग करेंगे. देन नो मोबाइल फोन, नो गैजेट्स आर अलाउड इनसाइड. एंड थर्ड जो रहेगा वो आउटसाइड द काउंटिंग हॉल रहेगा जो CAPF रहेगा. कितने राउंड में काउंटिंग पूरा होगी? अलग अलग हॉल्स के लिए अलग अलग राउंड्स है. मैक्सिमम हमारे 7 नंबर ऑफ राउंड्स है. तो जहाँ पे ज़्यादा पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे ज़्यादा राउंड्स है, जहाँ पे कम पोलिंग स्टेशन है वहाँ कम राउंड्स है. बट 5 to 7 राउंड्स है सारे. मैक्सिमम 7 राउंड्स. टोटल स्टाफ हमारा मोर देन 200 है फॉर काउंटिंग सुपरवाइजर्स, डबल नंबर फॉर काउंटिंग असिस्टेंट, एंड देन माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी रहेंगे. टोटल इट्स अराउंड 1000-2000 स्टाफ डेप्लॉयड इंक्लूडिंग पुलिस. बारिश के लिए कुछ प्रिकॉशन भी है? पूरा वाटर प्रूफिंग किया हुआ है और टनल वगैरह सारा वाटर प्रूफ किया हुआ है ताकि EVM मूवमेंट में कहीं पे भी बारिश ना हो सके. प्लस मेडिकल टीम रहेगा इन केस एनी हेल्थ इशू है.